Hold on, that turtle face is getting all this. से यहाँ पे डिलीवरीज भी होती हैं। हम रेडी हो गए, हम जा रहे हैं हम यूनिवर्सल स्टूडियोज। Welcome movie lovers to the entertainment capital of the world. I am Umar and today we are embarking on an unforgettable journey through the magic of Los Angeles. लॉस एंजलिस हॉलीवुड मूवीज़ के स्टूडियोज़ की वजह से बहुत मशहूर है। इसको एंटरटेनमेंट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। मगर इसके अलावा इस सिटी में बहुत आइकॉनिक प्लेसेस हैं, जैसे कि हॉलीवुड बुलेवार्ड, सनसेट एवेन्यू, ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी, बेवर्ली हिल्स और रूट 66 का लास्ट स्टॉप। रूट 66 एक अमेरिकन टूरिंग रूट है जिसका स्टार्ट शिकागो से होता है और लास्ट स्टॉप सेंटा मोनिका बीच पे है जो एलए में है। आज हम एलए को एक्सप्लोर करने का आगाज़ यूनिवर्सल स्टूडियोज से करेंगे। यूनिवर्सल स्टूडियोज 1912 में कार्ल लेमले ने बनाया था। इस टूर में स्टूडियो लॉट जहां आजकल भी फिल्म मेकिंग होती है उसका टूर भी शामिल है। यूनिवर्सल स्टूडियोज में बहुत सारी अट्रैक्शंस हैं जिनमें फिल्म सेट्स, थीम बेस्ड एरियाज, सोवेनियर शॉप्स, कैरेक्टर परफॉर्मेंसेज वगैरह शामिल हैं। यूनिवर्सल स्टूडियोज को एक्सप्लोर करने के लिए 3 से 4 दिन लगते हैं, इस वजह से ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी। हॉलीवुड स्टूडियोज की एंट्री में आइकॉनिक आर्चेज हैं, जहां आइकॉनिक यूनिवर्सल ग्लोब है। ये आपको एक अनपैरेलल्ड वर्ल्ड के डोरवे की तरह वेलकम करता है। इसमें एंट्री के बाद आपको मुख्तलिफ वॉकिंग एरियाज मिलते हैं और मोस्ट अमेजिंग पार्ट ये है कि आप जहाँ भी जाते हैं इसमें एक हॉलीवुड एसेंट्रिक टच मिलता है। यहाँ पे फास्ट एंड द फ्यूरियस सीरीज की लेटेस्ट मूवी एक्स में यूज होने वाली कार्स का डिस्प्ले है। व्हाट अ ट्रीट, अमेजिंग कार्स। दिस इज़ द विजिटिंग वर्ल्ड ऑफ द हैरी पॉटर। यहाँ पे हॉग्समीड और हॉगवर्ट कैसल बनी हुई हैं। बच्चों के लिए ये जगह ड्रीम वर्ल्ड से कम नहीं। यहाँ हैरी पॉटर थीम बिल्डिंग्स हैं जिनमें रेस्टोरेंट, सिवेनियर शॉप्स और हॉगवर्ट कैसल जिसमें हैरी पॉटर थीम 3D राइड है। और इस जगह की फेमस बटर बियर जो कि एक नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक है एंड इट्स वेरी टेस्टी।
Very good. Yeah. To not go by like. You know, I would never leave the. So okay. और इस पूरे टूर का शो स्टॉपर द वाटरवर्ल्ड फिल्म लाइव परफॉर्मेंस सेट, वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम। इसमें एक्टर्स मुख्तलिफ स्टंट्स करते हैं और इफेक्ट बहुत अमेजिंग है। ट्रू हॉलीवुड एक्सपीरियंस दैट हाउ दे मैनेज टू क्रिएट द रियलिटी ऑफ द सीन्स, मेकिंग इट एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। और इसके बाद स्टूडियो लॉट यूनिवर्सल स्टूडियोज़ का गाइडेड टूर, जो कि बहुत शानदार है। इसमें ऑफिसेज, फिल्म सेट्स, साउंड स्टेजेस एंड 3D मूवी थीम्स एरिया शामिल हैं। For the first 5 minutes of the tour, we've been driving by a few of the sound stages. We've been driving by some production offices. That part of the studio is called the front lot, and we've just crossed the border into the back lot. Now, over here on the left-hand side, this is where we're going to go for the rest of the tour. The back lot is a lot more visual than the front lot, because this is where we have all the movie sets that are too big to fit inside the sound stages. Quantum Leap has been filming out this part of our back lot. A couple of weeks ago, they were shooting a movie out production, so they rented out parts of our back lot for filming. Remain seated at all times and put on your 3D glasses. The Flintstones. They don't have engines. Flintstones don't have engines. They have to use their feet to get them to work. And this is disappointing. The car from Harry Potter doesn't really fly. There's a gyrosphere
up here. This is a vehicle that was designed and built for Jurassic World. The prize van, that's in Nope, which came out last July. We've got some military vehicles from the first Transformers. The Transformers movies are not Universal Films. They're all Paramount productions, but any movie studio can rent our sound stages or our backlot sets. At the end of the first Transformers, they do their final battle in the middle of a city, and they're rolling around, they're blowing up everything. That was New York Street that we just drove through. That was shot on the backlot. The Jeep that's on the right side of the tram, this is used in Jurassic Park. And the guy who built Jurassic Park in the first movie, his name is John Hammond. And we thought you guys might want to see dinosaurs. We put some on both sides of the tram, but they're spitters. Why would we do that? Oh, they're hitting the second car. That's terrible. That's why my seat has a window. That's a first. This is the scene from The Lost World with the RV that we just passed by. Jeff Goldblum, Julianne Moore, and Vince Vaughn are trapped while the T-Rex pushes it off the cliff. We're not going to use any computer effects, no CGI. We're going to use sprinklers, which are hitting the trees on the sides of the tram. We're going to turn them on, and we're going to show you how easy it is to create a storm on cue. Let's have the rain. Simple as that. Problem with this special effect, we do it all day. So every time a tram stops here, it rains, and all the water's recycled, but the set is built on a hill. And over the course of the day, a lot of water builds up at the top of the hill. At one point, all running down creates a flood. And there's been a couple times the flood has been a train as we're passing through. This afternoon, we are that train. So be careful if you're sitting on the left side, there's a flood coming. Uh-oh. Uh-oh. Wait a minute. There we go. Look up at one of the monitors, and here's that flash flood in a scene from the movie Big Fat Liar. We crossed the border into the Old West, and this is a very historic part of the backlot because these are some of the first sets built at the studio. They've undergone refurbishment many times over the years. They've even been moved to different parts of the lot. But these sets were originally built in 1915 for silent movies, and they're still used in productions. Never have I ever shot some scenes out here for their fourth season, their final season. Quentin Tarantino used these sets in Once Upon a Time in Hollywood. There are some stages across the water on the left. Stages 30 and 31 are the ones that we're currently using for The Voice. They're working on season 24. Last week they were shooting some of the blind rounds inside those stages. The bad place, like. Well, it doesn't sound awesome. That was a scene from the very first episode of the show, and that filmed right in front of us. There's a set right in the middle of the fork in the road. It's got the two blue doors. That was used as yogurt. And here's a little trivia about The Good Place. These are the same sets from Frankenstein. We used them in Dracula, the Wolfman, the Invisible Man. There's a scene in almost that's a set that we currently use for Bel Air. But it was originally built for a talk show that was constructed for Home and Family. Even though we caught the shark, they still don't want us to reopen the beach because there's another shark, and it's a bigger shark, and we haven't captured it yet. It's right in the middle of the water. That's a big shark. Oh, it's coming towards us.
Picture cars were all abandoned by the original owners. Nobody knows what happened to them. All of them disappeared pretty shortly after they checked into this hotel. This is the beach motel. An airplane crashed and destroyed the whole neighborhood. This is all a set that Steven Spielberg had built for War of the Worlds. The airplane crash site set is a perfect example of a set that is all designed around a vision of Steven. We just again to sit down and talk about War of the World. I thought, what if the 747 goes down right in a big neighborhood? ये थीम राइड्स का सेक्शन है. This section is very popular among youngsters as well as adults. इस हिस्से में फेमस मूवी बेस्ड थीम राइड्स हैं. जो स्टूडियोज का टूर है उसके अंदर बहुत मज़ा है. जो उन्होंने पुराने सेट्स हैं हॉलीवुड के, जो ऑलमोस्ट 1900 की शुरू की मूवी, साइलेंट मूवी से लेके जो एडवांस आजकल मूवीज़ बहुत चल रही हैं. फिर उन्होंने एक पिट दिखाई है जिसके अंदर वो जो जॉर्ज मूवी है और उससे रिलेटेड जो बैकग्राउंड और सी के सीन्स होते हैं वो कैसे करते हैं वो सारा देख. ये ऐसे सारा इस जगह पे राइड्स हैं सारी. नीचे जो है शुरू में मम्मी की आती है, उसके बाद यहाँ ट्रांसफॉर्मर्स का है, वो जुरासिक वर्ल्ड है, और उसके बाद यहाँ पे सुपर निटेंडो है. ये बच्चों की राइड है, ये इतनी वो नहीं है, लेकिन ये उससे रिलेटेड. और ये ट्रांसफॉर्मर का सारा है. ट्रांसफॉर्मर्स क्या है, यहाँ पे 2 रोबोट आते हैं जो कि उनके टाइमिंग्स हैं, तो वो उनके साथ पिक्चर्स वगैरह खिंचानी हो तो. इट इज़ अमेजिंग, वेरी गुड एक्सपीरियंस. लास्ट में यूनिवर्सल स्टूडियोज सिटी वॉक का टूर. सिटी वॉक में रेस्टोरेंट्स, सिनेमा एंड सिवेनियर शॉप्स वगैरह हैं. यहाँ पे ही यूनिवर्सल स्टूडियोज का एंड होता है. इसके बाद हमने फेमस वॉक ऑफ फेम, जो कि हॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक लोकेशन है, पे दिन का एंड किया. Just another story to tell. Have you ever felt you're missing the dream? Have you ever wished your life was like